Okay, dear students, the topic is electrostatic potential. Before that, you have studied about electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy, in which you have defined electrostatic potential energy of some test charge small q in the electrostatic field of some charge configuration where small q charge is being brought. Or in other words, we can say that you have defined potential q in terms of electric field of some charge configuration. Here you see this is charge capital Q, and in the electric field of this charge Q, we are moving this test charge small q from point R to point P. Now, in that situation, you have also seen that delta U is equal to UP minus UR, which is equal to WRP. What is delta U? It is a potential energy difference between point P and point R. And this is what WRP? WRP is the work done in moving test charge Q from point R to point P. Means work done in moving charge Q from one point to another in electrostatic field of charge capital Q. बच्चों हमेशा ध्यान रखो, एक चार्ज यहाँ पर कैपिटल क्यू है जो कि सोर्स चार्ज है, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज स्मॉल क्यू को चला रहे हैं. अब इस रिलेशन में दो बात है जो मैं पिछली बार आपको बताया भी था, आज फिर बता रहा हूं कि UP माइनस UR डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ चार्ज. UP माइनस UR जो है ये केवल डिपेंड कर रहा है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ चार्ज. इन अदर वर्ड, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट R to point P depends only on initial position and final position. Initial position of charge small q is R and final position of charge q is small r. So this work done only depends on initial point P and final point R. This work done is independent of path taken by charge small q in going from R to P. अब बच्चों ये देखो, R से P तक आने के लिए चार्ज के बाद बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन कोई भी रास्ता स्मॉल क्यू चार्ज अपना है, जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा वो केवल पॉइंट R और पॉइंट P पर डिपेंड करेगा. वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि पॉइंट R से पॉइंट P तक चार्ज को हम किस तरह से ला रहे हैं या किस पाथ से ला रहे हैं, जिसको कि फिगर नंबर 2.2 में भी दिखाया गया है. अगर आप टेक्स्ट बुक में देखो तो फिगर नंबर 2.2 में भी इसको दिखाया गया है. तो हियर द वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज path independent, and path independent, and it is the fundamental characteristic of conservative force. As you know that conservative force is that force by which work done is path independent, which you have already studied in your class 11th, means previous class. So here delta U is WRP. Clearly W infinity P equal to UP. W infinity P equal to UP minus U infinity. But U infinity is 0. As you know that at infinity potential energy is taken to be 0. So W infinity equal to simply UP. And by this relation we define potential energy of charge small q. Potential energy of charge small q. Now see, what this work done is directly proportional to the small q, because
force is equal to Q into E, and work done is related with force, and force is directly proportional to Q, and E is the electrostatic field at a point where a small q charge is being brought. So F is equal to QE, therefore W is directly proportional to Q. W is directly proportional to Q. It means work done in moving charge Q from this point to this point is associated with electric field due to some charge configuration capital Q. Simply, work done in moving charge small q from R to P is characteristics of electric field associated with some charge configuration capital Q है ना बच्चों, क्योंकि देखो F इज इक्वल टू क्यू ही होता है और W का रिलेशन F से होता है, आप जानते हैं बच्चों, W इज इक्वल टू F इंटू एस, तो W इज इक्वल टू क्यू ई इंटू एस, है ना, W इज इक्वल टू क्यू ई इंटू एस, तो W is directly proportional to Q. W is directly proportional to Q. Now here the ratio W by Q, more Q more W, less Q less W. It means this ratio will be independent of Q. This ratio will be independent of Q, and this ratio is nothing but the potential difference between point R and point P. It is the potential difference, and which is equal to UP minus UR by Q. If W is replaced by WRP, then it will be equal to UP minus UR upon Q. It can simply be written as VRP. The potential difference between point P and R will be equal to WRP upon Q. And this ratio can also be said as, इस रेशियो को क्या कहते हैं, this ratio can also be defined as work done in moving unit positive charge from point R to point P. This ratio is the work done in moving unit positive charge from point R to point P. Now, as before, as U infinity is 0, VR can also be taken as 0. If we consider R at infinity, then as usual, the point where electrostatic potential energy or electrostatic potential can be taken as 0 is the infinity that you already know. So it is simply equal to Vp minus V infinity equal to W infinity upon Q. So, and this is equal to Vp. This is equal to Vp, which is equal to W by Q, which is equal to W by Q, and Vp is what? Electrostatic potential at point P. Electrostatic potential at point P. Electrostatic potential at point P. So electrostatic potential at point P is the work done per unit charge. Work done per unit charge. It means electrostatic potential at any point in electric field of some charge configuration. Electric potential at any point in electric field of some charge configuration is the work done in moving unit positive charge from infinity to that point, और इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हो कहीं पर भी, ठीक है, किसी ऐसे पॉइंट पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सम चार्ज कन्फिगरेशन इज वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, एक्चुअली W इन्फिनिटी P को हमने W लिख दिया है, W इन्फिनिटी P को हमने W लिख दिया है, जो कि किसके बराबर है? Vp के, जो कि W इन्फिनिटी P को हमने W लिख दिया है, और ये जो रेशियो है W by Q, ये Vp के बराबर है,
means Vp is the electrostatic potential at P, and W is the work done in moving unit positive charge from infinity to point P. और point P कहाँ है? Point P है प्लस Q चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर। तो इस तरह से हमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन किया। तो ये सिंपल, तो बस बच्चों आप लोग ये जान लो कि जब हम चार्ज स्मॉल q की बात करते हैं तब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, और जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की आइडिया हमें कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की आइडिया हमको इस रेशियो से मिलती है, विच इज इक्वल टू W/Q। So dear students, I hope that this topic will be clear to all of you. Thanks.